Hi everyone, welcome back. If you're new here, then my name is Kinnari. Welcome. This tutorial is about cat eyeliner and classic red lip, and it is in Hindi, so if you cannot understand the language, then please turn on closed captioning for English translation. I'll also list the instruction on how to turn on closed captioning, CC, in the description box below. So without further ado, let's get started. आज का ये ट्यूटोरियल कैट आईलाइनर एंड क्लासिक रेड लिप के बारे में है. अगर आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन कीप ऑन वाचिंग. तो हम शुरू करेंगे स्किन प्रेप से, एम्ब्रियोलॉइज से, क्रीम से. और जो क्रीम लगा है उसको मैं स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी, और तब तक हम आईब्रो से स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए मैं अनास्ताशिया ब्राउ बेस इन मीडियम ब्राउन, इससे आईब्रोज आउटलाइन करूंगी. और देन अनास्ताशिया ब्राउ पोमेड इन मीडियम ब्राउन, उससे मैं फिल करूंगी आईब्रोज. Brow pomade in medium brown. को NYX ब्राउ जेल मस्कारा से सेट करूंगी. पेंटरली पॉट से आई शेडो एप्लीकेशन के लिए जैकलिनहिल का morphe का जैकलिनहिल पैलेट यूज करेंगे. हम जो फर्स्ट यूज करेंगे वो ये, जो सेकंड यूज करेंगे वो ये. पर जो हमने फर्स्ट शेड लगाया है उससे थोड़ा नीचे क्रीज को डिफाइन करने. थर्ड शेड इधर आउटर कॉर्नर्स में लगाने के लिए ब्लेंडिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि जब भी हम ऐसे लाइटर शेड्स यूज़ करते हैं और बहुत ही कम आई शेडो से हमें एक इफ़ेक्ट करना होता है, तो प्रॉपर ब्लेंडिंग से ही वो होता है. नहीं तो आई शेडो की लाइंस अलग आई शेडोज दिखते हैं जो ब्लेंड नहीं हुए. तो लिक्विड आई शेडो है जिसका नाम है किटन कर्मा. तो उसके लिए मैं ये बॉबी ब्राउन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक इंक. एंड उसके लिए मैं हमेशा जो यूज़ करती हूँ और हमेशा आपको बताती हूँ कि दिस इज़ बेस्ट ब्रश. ये है अल्ट्रा प्रिसाइज आईलाइनर ब्रश
बॉबी ब्राउन का। तो ये अच्छा कॉम्बो है आईलाइनर के लिए। अब मैं टैटी लैशेस की लैशे TL7 अप्लाई करूँगी और इसके बाद हम फेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। आईलैश कर्ल करके ये रिमेल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं। वो करने के बाद मैं आईलैश अप्लाई करूँगी। तो मैंने मॉइस्चराइज़र पहले ही लगाया हुआ है, अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का poreffesional। हम कलर करेक्टर लगाएंगे जो अर्बन डेके का नेकेड कलर करेक्टर इन डीप पीच। मैं इसको लॉरा मर्फ के ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करूंगी। सेटिंग स्प्रे से सेट करूंगी फाउंडेशन लगाने से पहले। तो आज मैं फाउंडेशन में यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन का फिट मी 220। लाइम क्राइम का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, शेड का नाम है विकेड, और उसको मैं डीपली इंटॉक्सिकेटेड एसेंस का लिप लाइनर है वो यूज़ कर रही हूँ। मैं LA गर्ल प्रो कंसीलर से मेरी अंडर आई प्रेप करूँगी और बहुत ही थोड़ा सा मुझे चाहिए ये कंसीलर टू कवर माय अंडर आई एंड लोअर लैश लाइन का मेकअप फिनिश करने के लिए।
सेट करूंगी जहां बहुत ही लाइट एप्लीकेशन कर रही हूं मैं। बाद मैं लोअर लैश लाइन का जो मेरा मेकअप फिनिश कर दूंगी। ये फर्स्ट शेड, काजल लगाने वाली हूँ। वो ब्राउन सा आईलाइनर पेंसिल है, उसका रिमेल का शेड है ये 111 पनामा। तो ये रिमेल का शेड है 111 पनामा, और ये ब्लैक नहीं है, ये ब्राउन सा शेड है जो मैं बहुत ही लाइटली लोअर लैश लाइन में लगा रही हूँ। अब ये करने के बाद हम हुला ब्रॉन्जर से कॉन्टूरिंग करेंगे वेरी क्विक। बॉर्जोइस का ड्यूओ ब्लशर लगाएंगे। ये है तो ब्रॉन्जर सा ही ब्लश, थोड़ा सा शाइन है यानी 2 शेड है। तो एक है लाइट शेड, डार्क शेड, इसका नाम है 03 कैरामेलो। तो इनकेस नाउ हम फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर यूज करेंगे जिसका नाम है हसला बेबी। तो ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। दिस इज माय टेक ऑन कैट आईलाइनर एंड रेड लिप। तो मुझे ज़रूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। मैं आपको मेरे नया वीडियो में मिलती हूँ, तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय गाइस।